आइए आज एक ब्रूटल ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये है कि चैट जीपीटी हमसे बहुत लार्जर सेट्स को प्रोसेस कर सकता है, नंबर्स को याद कर सकता है, टेक्स्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिसर्च की डेफिनेशन है वो ये है कि रिसर्च ओईसीडी के मुताबिक एक क्रिएटिव और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका मकसद नॉलेज को बढ़ाना है। जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो ह्यूमंस के साथ रहेगा और सिस्टमैटिक प्रोसेस के लिए हम पहले भी सिस्टम्स पे रिलाई करते रहे हैं, एप्लीकेशंस पे रिलाई करते रहे हैं और हम रिलाई करते रहेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा कि चैट जीपीटी क्या कर सकता है, हमारा इसमें क्या रोल है, एक एथिकल फ्रेमवर्क है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 10 ऐसी एआई टूल्स का आपको बताया है जिनको यूज किए बगैर आप स्लोएस्ट रिसर्चर हो जाएंगे। हर दुनिया का दूसरा रिसर्चर उनको यूज कर रहा है। इससे आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप एआई को बिल्कुल यूज करें, इसका एक एथिकल फ्रेमवर्क भी हमने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना जो हमारी रिसर्च है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आने वाले सालों में 2030 तक मजीद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कोर इशू यहाँ पे ये नहीं है कि लोग एआई यूज कर रहे हैं, कोर इशू ये है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, एथिकली आपने यूज करना है। असल प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हमने एआई यूज किया नहीं किया, क्वेश्चन ये है कि एआई यूज करने के बावजूद, सॉफ्टवेयर यूज करने के बावजूद जो भी हमने काम किया है, क्या हम उसकी मेथोडोलॉजिकल ओनरशिप को डिफेंड कर सकते हैं? क्या हम उसकी इंटेलेक्चुअल राइट को डिफेंड कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये मेरा है इस बात के बावजूद कि मैंने ये एआई की टूल यूज किया है? क्योंकि एआई की टूल्स तो ह्यूमन हमेशा यूज करते रहे। देखिए, कंप्यूटर से जब आपने पहली दफा कीबोर्ड से चीजें लिखना शुरू कर दी तो एक कंप्यूटर आपका हेल्प तो कर रहा था। फिर अगर आपने ग्रामरली से चीजें फिक्स की तब भी तो आपका हेल्प तो हो रहा था। फिर अब उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर यूज किया एनालिसिस के लिए, फिर भी तो आपका हेल्प हो रहा था। आज एआई भी आपका हेल्प वैसे ही कर रहा है जैसे मेंडले आपकी साइटेशन में हेल्प कर रहा था, ज़ोटैरो आपकी साइटेशन में हेल्प कर रहा था, एटलस टीआई आपका हेल्प कर रहा था, अनवीवो हेल्प कर रहा था। तो आज भी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग जो है ना जीपीटी 5 बेहतर करता है और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी आपको गाइड कर सकता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई है कि एआई के टूल्स पूरा का पूरा थीसिस लिख सकते हैं। तो इसमें अब असल जो इंटेग्रिटी का क्वेश्चन एकेडमिक्स के लिए क्रिएट हो जाता है वो ये है कि do we own the methodology? Can we defend the methodology, and can we say that intellectually we are the owners of our writing? This is the main question that we will be addressing today. So एक रीजनिंग लीप है जीपीटी 5 का जो हम सबको समझने की जरूरत है। देखिए, अब जो एआई टूल्स हैं जीपीटी 5 है, इट कैन डू द मल्टीपल स्टेप रीजनिंग, इट कैन एडवांस कोडिंग सपोर्ट। आपको जिस काम में 2 घंटे लगेंगे, आप एक टेक्स्ट दें उसको, उसको कोड बनाए, थीम बनाए, इट कैन डू इट। रिसर्च गैप आइडेंटिफिकेशन इट डज रियली वेल बिकॉज नॉट जीपीटी 5 में वेब सर्च भी है, जनरल सर्च भी है, so इट कैन डू रियली वेल। मैथोडोलॉजिकल स्ट्रक्चरिंग, यस इट कैन डू। अब मैं रिसेंटली मैं खुद उसको पढ़ रहा था, तो जो डाटा के लेवल है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, लिकट, जो आपका इंटरवल डेटा है और आपका जो है ना रेशो डेटा है। मैं मुझे पता है कि नॉमिनल डाटा पे काई स्क्वायर में रन कर सकता हूँ, मैं नॉमिनल डाटा पे जनाब टेस्ट रन कर सकता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, मैं ऑर्डिनल डाटा पे ये कर सकता हूँ, मैं रेशो पे ये कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं मल्टीपल जो रिग्रेशन की टेक्निक्स हैं, जो एसईएम की टेक्निक्स हैं, उनमें जाके मेरी बस हो जाती है। मैंने मशीन लर्निंग में, डेटाबेसेस में काम किया है, पाकिस्तान टेलीकॉम में मिलियन बिलियन रोज के डाटा में, तो मैं थोड़ा बहुत पाइथन को भी समझता हूँ, थोड़ा बहुत हदूप को भी समझता हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को समझता हूँ, बट माई I have limitations, despite of the fact that I have spent 10 years in the data. So what about a teacher who is just teaching in the classes from previous 10 years with a limited solution, with limited tech solutions? He might not have a studio, he might not have multiple equipments to analyze data. He might never seen, most of the 99% of the university teachers have never seen bigger databases of Teradata, and they never worked with the data that contains billions of the rows. अब इस सिचुएशन में आप डेफिनेटली आप सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और ना ही आपके पास इतनी फंडिंग है कि आप जो है ना खुद का कोई स्ट्रक्चर बनाए, खुद का कोई सॉफ्टवेयर बनाए। तो हमें ये जो द रीजनिंग लीप ऑफ द जीपीटी 5 की जो सिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, इससे इंडस्ट्री फायदा उठा रहा है, इससे हमने फायदा उठाना है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अगर किसी बंदे को 0% भी अगर ये है कि हम लोग इन टूल्स को किए बिना सरवाइव कर जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती पे है। और क्योंकि 100% ये टूल्स जो है ना टेक ओवर करेंगी चीजों को। आप ना यूज करें, इंडस्ट्री अभी भी यूज कर रही है, दे डोंट केयर अबाउट
your this side कि आप इतना traditionally फंसे हुए हैं एक चीज में, they are using it and they are producing lot of content talking about AAC Nielsen, talking about BCG, talking about Ipsos. They are doing really well. So coming towards the from plagiarism to intellectual ownership, ओल्ड कंसर्न ये था कि क्या आपने टेक्स्ट कॉपी किया है, न्यू कंसर्न ये है कि थिंकिंग किसके पास है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके पास है, वाकई आपका टॉपिक था, वाकई आपकी थिंकिंग थी, आपने स्ट्रक्चर करवाया, आपने मेथड डिसाइड किया, आप मेथड डिसाइड कर सकते हैं तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं, क्या आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो किसी केस के रेलिवेंट है, तो बिल्कुल आप ऑथरशिप ओन कर सकते हैं। नो ऑथरशिप कौन ओन करता है, दिस इज द न्यू इशू in the intellectual era, and this is the central question, and this is what all the researchers must defend. अब जो डिटेक्शन है एआई के, उसमें बड़े इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो इट्स डिफिकल्ट टू जनरेट फॉल्स पॉजिटिव डैमेज, रेपुटेशन का बहुत खतरा होता है। ट्रांसपेरेंसी आजकल के दौर में मोर रिलायबल है देन पॉलिसी। यू आर यूजिंग एनी एआई टूल, टेल यू हैव यूज्ड इट, हाउ मच ऑफ यू हैव यूज्ड इट, वेयर यू गॉट हेल्प फ्रॉम विच सॉफ्टवेयर, मेंशन करना जरूरी है, एथिकल है। तो डिटेक्शन वक्त के साथ साथ ना बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि एआई के सॉफ्टवेयर्स ह्यूमन जैसा कंटेंट जनरेट करना शुरू हो गए हैं। You can tell them this is my style, write in my style, I speak in this style, it will speak in your style. For example, whatever I'm speaking here, I'm telling you, whenever I will put this video on the YouTube, on TikTok, and anywhere, their system will automatically detect that what I'm speaking, how I'm speaking. They will dub it in multiple languages. I do not need the dubbing guys. So this is where we are standing. Detection is were extremely impossible. So 2026 what is the standard full disclosure? This is something that we must know, that researchers must disclose in 2026 and onward, that where AI was used, for what purpose it was used, and what was human authored. Transparency builds the trust. That's what we need to learn. And responsible use of AI, this is the framework that we can use the AI for acceleration, for search, for summaries. We can use it for structuring, outlining, formatting. We cannot use it for the interpretation, theory, and insight. The level 3 must be human, because I'm telling you, the OECD research definition, research is about creative, systematic process undertaken to increase the stock of knowledge. We must own the creative process, otherwise everything is being done by these tools. So this is ethical use, that if you are using for structuring, outlining, and for theory and insight, you must have your own thinking. Then the synthetic bias risk, this happens a lot. If AI writes your literature review, you inherit dominant narrative, because if you see latest article of HBR, if I was reading the MIT review, they're saying that the AI is kind of charging the creativity text from us. What is happening, that every message is similar, every writing is similar. So with the passage of time, we are losing the human part in the things. So if there's a bias risk, because chat gpt and gpt and is giving the same ideas to every other person. The human, this is the human role. Human need to identify that I cannot lose my originality. I have to be original. The way I speak, gpt cannot speak. The way I speak, so many people cannot speak. So हमारा जो रोल है इसमें, critical thinking must remain yours. Critical thinking must be our. When it comes to the qualitative research, we can say we can use the AI tools, Vivo, Atlas TI, WASP views, and other softwares for the coding, but interpretation and the reflexivity must be human driven. Similarly, in the quantitative, you can use it for the statistical analysis, assist with the model diagnostic, but statistical reasoning must be our. In case of the data privacy, never upload raw interview data, confidential data set, sensitive institutional record. This is extremely important. If you put it on chat gpt will make it it's part of the record, and maybe it can recommend to other people, because this is a system learning. So we have to be extra careful while doing the research. Researcher responsibility is to accelerate the process and ensure the originality, as it's a human. So it can use it for the speed, but speed can also impact the integrity of the human. Simple AI disclosure, AI tools were used for literature and mapping structural to, you can mention it. AI theoretical integration and interpretations were conducted independently. The all the theoretical and integrations were conducted independently by the author. You can write this statement. Dealing with the hallucination, yeah, AI is also sometimes hallucinate the thing. Maybe it will get better. A lot of top researcher papers were rejected because they could not tell the real citations. The citations were created by the AI. So we have to cross check the DOIs, digital object identifier, validate the policy references. Fact checking is important, if even when you are using AI. The global trend is AI transparency requirements, ethics audit, methodological verification system,
integrity reporting will become mandatory. This is the world they are saying, that if somebody is using AI, they must mention it. Common mistake we must avoid, all the researcher copy paste must be avoided, over dependence on AI must be avoided, documentation, no documentation, this must be avoided. This is a common mistake. We must focus on the verification, so never we must ignore the verification, documentation, and humans must always have an independent thinking process. Competitive advantage, AI is a competitive advantage if you are using it ethically. Researchers work faster, they publish stronger, they maintain credibility, and integrity becomes strategic capital when they mention that they are using. The Farooq principle, I call it, and I'm putting it end of every lecture, is that use AI as a tool. Do not outsource your thinking. Technology evolves, integrity remains constant. Thank you so much. See you in the next lecture. My final message is, dear students and professionals, the strongest researcher is not the one who avoids AI, it is the one who masters its responsibility. See you in the next lecture. Thank you.